of plan breaks on the first day only, and then you go into that guilt कि I'm not doing my best. People say they have been studying for 16 hours a day. सब बकवास है. Who is asking you whether you are on schedule or not? Who's asking you whether you are doing your test in a timely manner or not? Preparing for IIT JEE was different. Preparing for NEET was different. Preparing for CAT was different. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वैसा नहीं होता है. ये बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लेने चाहिए, बट दे ऑल्सो टेक 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट. अब आते हैं what are the things that have to be avoided. तो एक होता है perfect chart problem. Perfect chart problem is यार कि sometimes I see students making this kind of schedule. I'll get up at 6 in the morning, then from 6:30 to 8:30 I will study. Then I'll take breakfast break, and then from 8:30 to 10:30 I'll study. Then I'll take 15 minutes का break. Then from 10:45 to 1:45 I'll study. या ये सब नहीं होता है. This is not viable. This is not feasible, and this kind of plan breaks on the first day only, and then you go into that guilt कि I'm not doing my best, and this guilt further worsens your preparation. It harms your preparation. तो यार one thing that you have to avoid is कि very strict, very perfect chart. यार ideally अगर भगवान बैठे होते तो कैसे पढ़ रहे होते? भगवान ऐसे पढ़ रहे होते तो मैं भी ऐसे पढ़ूंगा. नहीं. Behave like a human. Be realistic. All those stories where people say they have been studying for 16 hours a day, सब बकवास है. कोई एक आधा exception होगा. In reality, it's not possible. Human brain is not made like that. People can work for 16 hours a day, but उसमें दिमाग कितनी देर तक यूज करेंगे वो अलग चीज होती है. पढ़ाई आप 10-12 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते हो. 10-12 घंटे बहुत है यार. मतलब if you are able to study for 12 hours a day, you are amongst 0.01% people on earth. आप सबने प्लान किया होगा, बट पूरा नहीं होता है. And that is why very rigid, very perfect kind of plan does not work. We have to be careful about it. Similarly, दूसरा सब्जेक्ट होता है 3-4 GS subjects in a day, जो मैंने आपको पहले भी बताया. This is something that has to be avoided. It will not lead to any retention. It will make you feel tired. You will not understand anything. Avoid it. क्या बोला? Maximum 2 subjects, 1 GS, 1 optional, or if you're bored of a GS, 2 GS, and that's it. If you're not doing optional, then 2 GS. Do it one by one. I have seen some coaching institutes which start like this. एक दिन वो history पढ़ाएंगे, दूसरे दिन geography, तीसरे दिन science, चौथे दिन economy. That's not a good thing. You should ensure that you are in any case not doing more than 2 subjects at a time. That's it. Then आते हैं unrealistic blocks. Unrealistic blocks क्या है कि when you, rather than studying for 90 minutes or 2 hours, you make a plan. I'll sit at 9 AM and I'll keep studying till 1. ये workable नहीं है. Ignore कर दो. Human body doesn't work like that. Human body needs rest regularly. Okay. Then no revision time. मैंने आपको बताया revision crucial है. Without revision, if you'll keep a plan where revision is not involved, you will fail. पॉजिटिवली. कोई भी बच्चा बिना सिस्टमैटिक रिवीजन के सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर नहीं करता है, इसको मान जाओ. अगर आपने हर दूसरे दिन रिवीजन का प्लान, हर 7वें दिन रिवीजन का प्लान, हर महीने रिवीजन का प्लान नहीं रखा हुआ है, यू विल कीप फॉरगेटिंग थिंग्स, एंड इन स्पाइट ऑफ पुटिंग इन द बेस्ट ऑफ योर एफर्ट्स, यू विल नॉट बी क्लियरिंग द एग्जामिनेशन. फिर copy pasting the topper's timetable. ये भी मैंने आपको समझाया. ये we're summarizing all that thing कि copy pasting doesn't work. Your background, your constraints, your mindset is different from the other person's situation. You cannot just copy paste it. Your timetable has to be as per your plan, and please give time buffer for real life. That is, आप ये मत प्लान करना कि दिवाली में घर ही नहीं जा रहे हैं. नहीं, दिवाली में 2-3 दिन का ब्रेक लेना है. घर में फंक्शन है, उसमें 2-3 दिन का ब्रेक, बहुत लंबा नहीं, बट उन सब में जाना है. when you plan for a 2-year preparation, you're planning for 2027 exam. For 2 years, you cannot just completely close everything and block yourself. आपको mental health में भी problem होगा, आपको physical health में भी problem होगा. ये नहीं करना है. तो these are some of the pitfalls that I want you to avoid. फिर not getting any guidance also sometimes become a problem. Not having any accountability, no one asking you. कई बार मैंने देखा है ये ना, this is a problem with
with the best of the students. मैंने generally देखा है people who have graduated from IITs or people who have graduated from good medical colleges, उनके केस में क्या होता है ना, they feel like मैं खुद से कर लूंगा सब, and because they are so adamant कि मैं खुद से कर लूंगा, they don't seek a mentor. And when they don't seek a mentor, they are not able to correct themselves. Plus there is a lack of accountability. कैसे? Who is asking you whether you are on schedule or not? Who is asking you whether you are doing your test in a timely manner or not? And this becomes a problem. तो जो best of the students हैं, उनके साथ भी ये issue होता है. देखो, preparing for IIT JEE was different, preparing for NEET was different, preparing for CAT was different. सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वैसा नहीं होता है. यहाँ पे डिसिप्लिन तरीके से पढ़ना जरूरी होता है, और उसके लिए क्या जरूरी होता है? उसके लिए कोई अकाउंटेबिलिटी जरूरी होती है कि यार आई हैव टू फिनिश दीज टारगेट्स एंड देयर इज समवन हु इज लुकिंग एट इट, एंड तो मेरे ऊपर प्रेशर रहेगा. आई हैव टू, इन केस आई फेस सम प्रॉब्लम, आई विल गो एंड सीक सम मेंटर हु विल बी एबल टू गाइड मी, रादर देन कि नहीं मैं तो अब एकदम IIT बॉम्बे से हूँ, IIT दिल्ली से हूँ और मैं टॉप 100 रैंकर हूँ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है. ये एटीट्यूड लीड्स टू प्रॉब्लम्स. ये एटीट्यूड लीड्स टू दीस पीपल फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंज इन देयर प्रिपरेशन. ये बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लेने चाहिए, बट दे आल्सो टेक 3 attempts, 4 attempts, 5 attempts टू करेक्ट the mistakes that they have done. They feel like यार हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, we are very hard working from our childhood, we are studying for 10-12 hours, but if you don't have proper mentoring, if you don't have someone who can guide you who can guide you, यार ये book suitable नहीं है, ये वाली कर ले, या if there is no accountability, the best of the students will also get diverted, and वो ठीक होने में फिर कई बार कई साल लग जाते हैं, and even after that students don't get selected.